कहाँ तक किया था हमने? 87 हो गया था, 88 स्टार्ट करते। चल क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज इट से? प्रॉपर 88 निकालते हैं। ओके, 88 बोल रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू 1, सो ओके, एंड बी का कॉन्जुगेट, ओके, complement whatever denotes the event complementary to B, then okay, probability of A given BC, okay, that's his probability of A is the proper graph for now। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे दो सेट A और B है, राइट। तो बोल रहा है कि A and B are two events such that probability of B is not equal to 1, whatever, and this denotes the complementary to, okay, probability of A given BC, so given BC, मतलब ये सारा एरिया, उस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, ये एरिया डिवाइडेड बाय ये सारा एरिया, राइट। सो ये एरिया कितना है, वो बोल रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हिच इज दिस कंप्लीट थिंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हिच इज वेरी करेक्ट, सो इट्स दिस एरिया, एंड देन दैट अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हिच इज आल्सो करेक्ट, राइट। सो ए इज करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is bigger than or equal to probability of a plus probability of b minus 1, y minus 1, okay, so हाँ, तो probability of A plus probability of wait A intersection नहीं है, नहीं, हाँ intersection ही तो है, so why is this inequality true? Probability of A plus probability of B minus 1, okay, you mean like probability of A minus of probability of sorry, minus of 1 minus probability of B, right? या फिर तुम एक्चुअली ऐसा बोलना चाहते हो, so in that case probability of A ये चीज़ है, probability of B ये पूरी चीज़ है, that minus 1, यानी कि तुम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट तुम ये एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर सिर्फ इतना रह जाएगा, राइट, इतना रह जाएगा, प्लस जो सारी ये चीज़ें हैं, राइट, ये सारे पॉइंट्स बट निगेटिव में रह जाएंगे, सो यस इट इज इन फैक्ट बिगर नॉट इक्वल टू दैट थिंग, सो इट्स जो तुमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज दैट्स जस्ट इन फैक्ट क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट माइनस 1 मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस जो जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट रहेगा ए यूनियन बी का वो, एंड उसमें अगर कुछ एलिमेंट्स रहे देन दैट मींस ऑफ कोर्स वो उससे बड़ा रहेगा, एंड कुछ नहीं रहा दैट इट्स इक्वल, लेस कभी नहीं हो सकता, सो इट्स करेक्ट, बी इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज बिगर देन, ये क्या है, क्या चीज है ये, ओह ओके, तो जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे बिगर देन लेस देन किया है, अकॉर्डिंग एज, so probability of A is bigger than less than A given B, okay, probability of A क्या रहेगी, ये चीज अपॉन ये सारी चीज, and probability of A given B, well that's just this thing upon probability of B, so probability of A intersection B upon probability of B basically, right, okay, A given B conjugate, okay, बहुत अजीब हो रहा है, या वेल ये अपन वहां पे भेज सकते हैं, दिस इज वेरी वियर्ड एक्चुअली, सो probability of A and probability of A given B, मतलब कि ये पूरा एरिया अपॉन ये पूरा एरिया, राइट, और इस केस में है A given B कॉन्जुगेट, मतलब कि ये पूरा एरिया अपॉन ये पूरा एरिया, और दूसरी, राइट, ये पूरा एरिया अपॉन ये पूरा एरिया, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब ओके, ये बहुत अजीब हो रहा है, इसको अपने कुछ भी अलग टाइप से लिखना पड़ेगा, ओनली देन इट विल एक्चुअली मेक सेंस। तो जैसे अपन ने यहाँ पे ये चीज यूज करके लिखा था, सिमिलरली यहाँ पे अपन इंटरसेक्शन वगैरह यूज कर सकते क्या, सो A given B, then that's just probability of A intersection B upon probability of B, so what you're saying is the probability of A bigger than or less than A intersection B, and ये कैसा हो जाएगा, probability of this thing upon probability of B,
राइट। तो मोर लाइक तुम ऐसा बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज बिगर देन और लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस यही चीज यहाँ पे बस तुम्हें चिपका देनी है, एंड देन वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। देन यू कैन जस्ट पुल इट लाइक दैट, एंड देन दिस विल जस्ट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज बिगर देन लेस देन, क्योंकि वो पॉजिटिव है साइन चेंज नहीं करेगा अपन, बिगर देन लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लाइक दैट। तो अब क्या तुम इसको ये तो कैंसिल कर सकते हो यार, बहुत ही अच्छा। और इसको उधर भेज दो, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is bigger than less than probability of A intersection B. Look, same thing. तो हाँ ये सही है, अगर इसमें बिगर देन है तो फिर इसमें बिगर देन होगा, अगर इसमें लेस देन है तो फिर इसमें भी लेस देन होगा। सो सी इज एक्चुअली करेक्ट। सो 88 के लिए यू कैन हैव A, you can also have B, you can also have C, and D है probability of A. Okay, this thing. Well, yeah, of course, because look, या तो A होगा या फिर A का कॉम्प्लीमेंट होगा। B जो B का कॉम्प्लीमेंट्री सेट है उसमें या तो A होगा या फिर A का कॉम्प्लीमेंट होगा, ऐसा कुछ थर्ड आउटकम तो है नहीं। तो या सारे केसेस ऐड करके प्रोबेबिलिटी जो B कॉम्प्लीमेंट का एरिया है वो अपने को मिल जाएगा। दैट मींस ऑफ कोर्स इट्स जस्ट वन, राइट। सो इन फैक्ट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, A B C D। 88 का A B C D। Okay, let's go to 89th. 89th is a line is drawn to the point something to meet the curve y equal to 1 upon x y equal to 1 in the points A and B. Points A and B lie on the same side of P. X y equal to 1 इस टाइप का curve है। Okay, line is drawn to the point P, negative 1 comma 1. Negative 1 comma 1, I wonder ऐसा क्यों है? So that lies on the opposite curve, so ठीक है। To meet the curve in points A and B. A and B lie on the same side of P. Same side of P. What? क्या बोलना चाहता है ये? Same side of P यानी क्या? I don't know. Okay. So सिर्फ एक तुम्हें पता है कि तुमने एक लाइन ड्रॉ की है such that it meets it at A and B. Some 2 points. A point R is chosen on this line such that PA, PR, and PB are in AP. What? Okay, are in AP. PA, then PR, and then PB. So maybe like R तुमने यहाँ पे choose कर लिया. Of course, इनका midpoint. That's the only way. So A और B का midpoint. In the locus of R, B. यार यहाँ पे P का कोई हाँ P का है वहाँ तो क्योंकि वो fixed है basically. And that okay cool. तो basically तुम बोल रहे हो कि एक point नेगेटिव 1 कमा 1 है, उससे तुम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, वो जहाँ पे भी जो 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेगी उनका मिड पॉइंट ढूंढो, सारे लोगों को बताओ। ओके कूल। सो या क्या कर सकते हैं अपन, y इक्वल टू 1 प्लस x प्लस ओके m इंटू एक्स प्लस 1, ये एक चीज हो जा सकती है, मतलब या क्योंकि या दिस विल बी अ लाइन passing through negative 1 comma 1, और फिर इस लाइन में जो भी एक्स वाई है अगर वो इसे भी लाई करते हैं, so just gonna put that over there, and this is x plus mx square plus mx equal to 1 of course, and that just means mx square plus m plus 1x minus 1 equal to 0, right? So दो x वैल्यूज अपने को मिलेगी इसकी और अपने को मिड पॉइंट ढूंढना है। ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट से x1 plus x2 is negative of m plus 1 upon n, right? And m1 times m2 is 1 upon n. So basically x mid is what? Negative of m plus 1 upon n. तो ये तो अपने को मिल गया। एंड सिमिलरली y मिड पॉइंट अपन ढूंढ सकते हैं, और इनफैक्ट डायरेक्टली अपन ढूंढ सकते हैं ना, क्योंकि या ये चीज यूज करके, एंड दैट वुड जस्ट बी क्या कर रहा था मैं, हाँ 1 plus m into x plus 1, so x plus 1 यानी कि ये चीज x midpoint plus 1, sorry, this thing plus 1, that is negative 1 upon m basically, so this into negative 1 upon m, which is, oh wow, this is just 0. So you are saying कि y equal to 0, huh? So ये हमेशा, wait, but this doesn't make sense because how can this be?
at two different points. And no, why? This doesn't make sense. Y midpoint should not be 0. क्यों होगा वैसा? But that's what x plus 1 is, because oh god, ये क्या हो रहा है? It is just negative 1 and oh sorry, x midpoint should be half of this thing because x1 plus x2 is negative m plus 1 upon m. उसका आपको को आधा चाहिए. So yeah, not correct. तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus, so x plus 1 in this case, that would just be m minus 1. So m into m minus 1 upon m, like that. और ये चीज तो गई, मतलब 2m actually. So this is going to be what? M plus 1 upon 2. Cool. So y mid is this and x mid is what? Negative of m plus 1 upon 2m. और अपने को सिर्फ एक लोकस ढूंढना है. Oh, this is bad. y mid x mid के जब अपन y x चूज करेंगे. So इस फॉर्मेट से अपने को x y में क्वेश्चन चाहिए रहेगा. और फिर तुम डिवाइड तो कर सकते हो ऑब्वियसली. वो कितना यूजफुल है आई डोंट नो. यहाँ पे मैं 1 upon m मिलेगा राइट. ओके मे बी इस टाइप से. सो लेट्स से कि m plus 1 equal to 2y, that just means कि m is 2y minus 1, and in this case में you just have 2x equal to negative 1 upon m. In other words, 1 upon m is negative 2x negative 1 basically. So m 1 upon m multiply कर दो, just get 2y minus 1 into फिर नेगेटिव सामने ले रहा हूँ तो 2x plus 1 that's equal to 1 basically. So यहाँ पे नेगेटिव 1 पुट कर दो. in fact that's going to be what? 4xy plus 2y minus 2x minus 1, वो तो चला जाएगा ये. So this is just the equation 4xy plus 2y. So basically what? N is equal to 0 of course. So 2xy plus y minus x equal to 0. That is the locus. That means 2xy equal to x minus y. So it should be b, right? So 89 का b. I don't know. इसके क्या और locus हो सकते थे? No idea. 89 का b तो है at least. 90 is the base BC of a triangle ABC is fixed and the vertex A moves, satisfying the condition cot b by 2 cot c by 2 equal to 2 cot a by 2. Then hey, oh yeah, मुझे याद तो आ रहा है in fact, but okay. So the thing is कि cot summation of cot a by 2, that thing is actually the same thing as product of cot a by 2. Right, that means अगर मैं यहाँ पे cot a by 2 add कर दूँ, just basically get what? Product of cot a by 2 का left side और यहाँ पे ये बचेगा. तो this is cot of b by 2 cot of c by 2, that is equal to 2. That's what it actually means. But now what? This is good and all, but इसका मैं क्या कहूँ? I don't know. Cosine. No, that's not good. That's not good. Then base fixed है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. Hey, I think I know कि b by 2 c by 2 कहाँ पे मैंने देखा हुआ है. It's just कि इन सेंटर में वो यूज होता है, राइट? तो अपन वो यूज कर सकते हैं, राइट? या सो जब भी तुम्हारे पास में ट्राइंगल आता है, राइट? अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है. सो सपोज ये अपना a है, दिस इज b, दिस इज c. ये साइड a, ये साइड b, ये साइड c. जब भी इन सेंटर में ड्रॉ करूंगा, यू नो दैट दिस लाइक ये जो दोनों हैं ये इक्वल होने वाले हैं. एंड गेस व्हाट? इट्स जस्ट s minus a, right? Semi perimeter minus a. And also at the same time you know कि right, this thing is just r because no, not this thing actually. It's not what I want. इन सेंटर वहाँ पे ड्रॉप तो होगा, बट या वो नहीं चाहिए मुझे. जस्ट वांट द परपेंडिकुलर एक्चुअली. तो ये चीज स्मॉल आर होगी, राइट? या I just wanted in terms of the side. और साइड के टर्म्स में कैसे तुम इसको, I mean you can put it, but it's just a lot of problematic thing. Not going to work. Side. Oh, so जो small a value है ये तो fixed है ना?
हम्म स्मॉल है अपना फिक्स्ड है एंगल बाइसेक्टोरियल cot b by 2 cot c by 2 so that makes sense. Doesn't make sense. I mean you know कि s minus a क्योंकि ये चीज रहती है right tangent of a that's s minus a that's just r cot of a by 2 right kind of that thing so basically तुम बोल रहे हो कि cot a by 2 is proportion is it's what s minus a upon r अगर मैं वो सारी चीज इसमें पुट कर दूं then yeah you can just eliminate r and बिना आर के केयर करते हुए भी अपने को एक कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा सो इट्स जस्ट व्हाट 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस ए हाँ एक्चुअली काम कर सकता है एंड दैट्स इक्वल टू cot b by 2 plus cot c by 2 which would be s minus b into s minus okay plus s minus c I think राइट तो इसकी जरूरत नहीं है ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है अपने को अपन डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा है एंड इट वर्क्स सो कूल या ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था सो यहाँ से 2s और यहाँ पे 2s है वो कैंसिल हो जाएगा don't have to worry about that. It's basically just 2a equal to b plus c. That's all it is. Huh? Nice. So 2a equal to b plus c. So 90 का b. Nice. है बट अपन ने ये किया ही नहीं कि bc फिक्स्ड है ओह अच्छा उसके लिए c और d है सो 2a equal to b plus c and guess what हमारा a तुमने फिक्स कर दिया राइट तो तुम बोल रहे हो कि b plus यानी कि ये जो दो है इनका एडिशन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट 2a that's an ellipse so D is correct and B is correct. Is that correct? Yeah, I think it is. D and B. Let's go for 91. Greatest term in the binomial expansion of this thing where a is equal to 1 and x equal to 1 upon 3 is so general term क्या रहती है just 9CR ये बहुत कर दिया 9CR a power 9 minus r and 2x power r basically and it's just NCR a क्या है a is just 1 so you don't have to worry about that anyway and then it's just 2/3 to the power of r that's what this thing is so you know like initially क्या होगा कि initially just have r equal to 0 right तो यू स्टार्ट ऑफ एट 1 फिर उसके बाद में आ जाता है 2/3 into 9 तो वो बड़ा होने लगता है अपने को देखना है कि सबसे बड़ा कब होगा अगर उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाए ऐसे नंबर्स कौन से सो व्हाट वी वांट इज दैट 9CR plus 1 2/3 r plus 1 that should be less than 9CR 2/3 to the power of r ऐसा कब होगा that actually means 2/3 is less than 9CR upon 9CR plus 1 yeah we can write this differently so it's just 9 factorial upon r factorial 9 minus r factorial यहाँ पे जगह 9 factorial r plus 1 factorial and then 8 minus r because r plus 1 right so 8 minus r factorial right एक कम that means कि ये एक बचेगा without the factorial यहाँ पे तो चला गया and this is just plus so it's just r plus 1 upon 9 minus r what you're saying is कि 9 r plus 1 upon 9 minus r is bigger than 2/3 so 18 minus 2r is bigger than sorry less than 3r plus 3 then 5r is bigger than 15 so r should be bigger than or equal to in fact equal to भी चल सकता है ना so because अगर वो वहां पे stagnate हो गया तो भी चलेगा so bigger than or equal to what 5 sorry 3 so अपने को r equal to 3 चेक करना चाहिए और r equal to 4 और r equal to 2 चेक करना चाहिए ये तीन वैल्यूज ही अपने को कुछ ना कुछ दे सकती है right so you have to check 2 3 and 4 seriously तो 9c2 calculate करो 9c2 is 9 into 8 upon what 2 28 so 28 into 2/3 की power 2 ये हो जाएगा r equal to 2 वाला टर्म फिर 3 वाले टर्म के लिए 9c3 so 9c3 is यहाँ पे सेम चीज आएगी एक्सेप्ट यहाँ पे into 3 वहाँ पे into 7 so
8 यहाँ पे 28 कैसे आया, मैं क्या कर दिया, सॉरी, इट शुड बी 4 into 9 which is 36. So 36 into 2/3 की पावर 2. फिर नेक्स्ट आता है या सो लाइक R to R+1 जो ट्रांजिशन है उसमें इंक्रीज नहीं हुआ, अपने को ये देखना, तो एक्चुअली अपने को 2 देखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू लुक एट 3 and 4, और अपन 2 ऐसे भी देख लिया तो क्या जा रहा है। फिर 3 की बात करते हैं। सो फॉर 3 9C3 is just 9 into 8 into 7, 2 and then 3 like that, so 36 upon 3 यानी कि 12 into 7, is that correct? I think so. 12 into 7, of course. 7 into 7 and 14 is just 84. So 84 into 2/3 की power 3. और finally just have 9C4. So 9C4 के लिए हो जाएगा n in 9 into 8 into 7 upon 2 into 3 into 6 upon 4, I think. So it's just 3 upon 2 like that. So 3 upon 2 of this quantity, which, yeah, this is 42 into 3, which is 128. No, 42 into 3 is 126. So 126 into, hey, wait a second. It's just 3 upon, of course, वो equal होना चाहिए था ना? Yeah. So what you're saying is it's just 84 into 2/3 की power 3. Sorry, 4. 9 into 3 upon 2. Well, it's the same thing as that. So ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये जो है ये दोनों टर्म्स, ये हाईएस्ट टर्म्स है, मतलब कोएफिशिएंट वाले, राइट? सो दैट्स r equal to what, r equal to 3 and r equal to 4th टर्म, यानी कि 5th और 6th टर्म, सॉरी नो 3 और 4 था ना, तो 4 and 5th, या 4th and 5th टर्म, सो 91st का a and b, राइट? और ये टर्म इससे छोटी होना चाहिए आई थिंक, और है भी छोटी बिकॉज दैट टाइम्स 2/3, राइट? So 2/3 of 84, that is maybe इसका 3 upon 2 का डालना, so क्या 80 into 3, which is 54. Well, it's less than 84 anyway, so yes, it works. Next, if f of x is a polynomial function from real to real such that f of 2x is equal to f dash of x, f double dash of x, which of the following is correct? What? Why? F of 2x is this, okay. वाओ, ये बहुत बुरा है। Oh wait, it's a polynomial function, but okay, फिर वो बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर डालेगा अपने को। So the thing is कि f dash obviously 1 डिग्री कम रहेगा, so let's say इसकी डिग्री 10 थी, तो n equal to n minus 1 plus n minus 2, isn't that right? So n is just 3 basically, so ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, या इट वाज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये होना थोड़ा सा अजीब नहीं है, राइट? Let's say it was, I don't know, ax cube plus bx square plus cx plus d, I think. Right. So तुम बोल रहे हो कि ये चीज हो जाएगी इक्वल टू 3ax square plus 2bx plus, एक काम करते हैं, सिर्फ अपन मोनिक पॉलिनोमियल देखते हैं, उसके बाद में या सो ना ये भी चल सकता है ना, so 2bx plus c and then this times इसका डेरिवेटिव, so 6ax plus 2b like that. Is this what you're saying? तो x cube टर्म देखते हैं ना, x square times x, वही तरह ऐसा x cube term आ सकती है, that just means a is 18a squared. So either a is 0 or a is, well 0 तो चलेगा नहीं because then it doesn't make sense, क्योंकि यहाँ पे n डिग्री थी, तो whatever. So a should just be 1 upon 18, that's the only way for this to work. A equal to 1 upon 18. Cool. अरे यार, so a is 1 upon 18 and gotta figure out what b is. So b के देखते हैं second term, so b is second degree term, so ये चीज times constant, so it's gonna be like that, so 6ab plus
ये चीज टाइम्स ये चीज, which is just 12, so it's 18a. Guess what? 18a is just 1, so b equal to b. Okay, वो तो obvious है. And then let's go for shit. ये क्या हो गया? Let's go for c. So constant terms, c is equal to, sorry, linear terms. So 2b times c, so it'll be 4b squared. We don't know what b is. Okay. And yeah, plus 6ac. Okay, cool. All it actually tells us कि ये तो बहुत बुरा हो गया. 6ac, and then a is just 1 upon 18, so this is what, 4b squared plus c upon 3, so 2/3 c is equal to 4b squared, right? Yeah, so c is 6b squared. C is 6b squared and a is 1 upon 18. That's all we know right now. Okay, cool. तो क्या करूँ मैं इसके बारे में? It's a 1-1 function. I mean, do you know कि ये ऐसा होता है? ये अगर 1-1 फंक्शन, इसका मतलब है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नहीं. ओके, सो क्या ये चीज हमेशा पॉजिटिव है? इसका क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है. व्हाट यू मीन इज लाइक b squared, so 4b squared minus 4 times of 3a into c. Is this thing positive? क्या ये ऐसा हो रहा है? That just means कि b squared is bigger than 3ac. But guess what? A is 1 upon 18, right? Oh yeah, a is 1 upon 18. So like it's what? 3 into 1 upon 18, and then c is just 6b squared. So it's equal to that. इसका मतलब है कि इसका एक ही रूट रहने वाला है. And in that case, yeah, because it's bigger than or equal to 0 all the time, you can say it is in fact 1-1. So a works. F of x equal to x has 3 roots. I don't know. So इसका मतलब है कि तुम्हें c की जगह पे c-1 रखने की इच्छा है. It has 3 roots. कोई भी क्यूबिक के 3 roots हो गए अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है. तो फिर अगर यहाँ पे c की जगह पे c-1 होता, then it would have been like this. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता? बस यहाँ पे c-1 रख दो. Isn't that right? So यहाँ पे c-1 आ जाएगा. Is this going to work? Well, of course 3ac जो है वो तो कैंसिल हो गया. So that's the same thing as asking is 0 bigger than or equal to negative 3a, but 3a, yeah, that's 1 upon 6. So it is in fact right. So इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है यार. That means इसके 3 रूट्स हो जाएंगे, which makes correct. Yeah, it's just gonna have 3 roots. Of course. और more like इसके 2 मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगी. बट क्या वो हमेशा रूट्स गारंटी करते हैं? नो, नॉट रियली, बिकॉज ये ऐसा भी ग्राफ हो सकता है ना. तो it's bigger than that. I get it. I get that. But that's not all. It's still problematic. हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही. X equal to x. 3 roots. I don't know, man. F of x is into. Into. Wait, what? Onto is when is surjective. Into is opposite of surjective, I think. Yeah. So range जो है वो कोडोमेन के अंदर है, but पूरा उसको कवर नहीं कर रही. So no, f of x is not into, it's onto, because वो negative infinity पूरा जा रहा है. F of 3 is equal to 12. How do you know? Oh wait, it's not f of x equal to. Oh shit, अपन ने पूरा का पूरा गलत किया यार. यहाँ पे 2x है. नहीं, यहाँ पे 2x चाहिए था. This is all just wrong in that case. क्या किया मैंने? 8ax cube plus 4bx square plus 2cx plus d. एक्चुअल में ऐसा इक्वेशन चाहिए था. फिर तो पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा इस पे तो. So 8a would just be equal to 3a into 6a. That just means कि क्या यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा. So a is
4/9. Okay, that's nice. Okay, फिर क्या उसके बाद क्या b के बारे में देखते हैं. So 4b is equal to, let's look at this thing. ये क्या स्क्वायर टर्म से, तो ये times ये, it's just 12ab. Okay, and then x squared times constant term, so plus 6ab. वो still okay है, it's just 18ab, right? So 4b is equal to that. Okay, but a is what? 4/9. Wait, what? That's no. क्या क्या कर दोगे इसमें? यहाँ पे 2 आएगा और फिर 4 आएगा, then this doesn't make sense. It's equal to 8b. So b is equal to 0. Okay, तो b है ही नहीं इसमें. That's not good. क्योंकि अपना पिक्चर बहुत ही अलग आया था इससे, तो शायद से अपन कुछ गलत कर रहे हैं, बट hey, whatever, let's just keep going. So इसमें a नहीं है, so इसमें b नहीं है, इसमें सिर्फ a है और c है in this case. Okay, something like that. Hey, guess what? यहाँ पे फिर कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं बची, तो फिर d भी नहीं होना चाहिए इसमें, because yeah, okay, वो भी गया. Okay, so now what? cx in, okay, so अब अगर लीनियर टर्म की बात करूँ, it's just 2cx. So 2c is equal to, यहाँ पे लीनियर टर्म क्या आएगी? सिर्फ एक ही आ रही है, 6ac. Wait, what? That means c is also 0. Wait, no, but okay, c is also 0. That's also gone. क्योंकि अपन ने ऑलरेडी अज्यूम किया था कि a तो 0 नहीं हो सकता. Sorry, a तो क्या 4/9, and this doesn't make sense. So it has to be 0. Then this is also gone. तो सिर्फ इतना सा ही बच गया इक्वेशन, तो which means our polynomial is just 8ax cube, which is basically what, 32.9 x cube. That's what it is. That's our function. तो फिर ठीक है, क्या करूँ मैं इसका फंक्शन का? So it's a 1 polynomial. Very correct. It has 3 roots. What? So 32x cube equal to 9x. इसके 3 roots है. What you are saying is कि, well, let's check derivative. So 3 into 32x squared minus 9. Is this always bigger than 0? In other words, is, well, actually no, because you just know कि ये square और ये negative ऐसे काम नहीं करेगा ना. Does this actually have 3 roots though? Look, x ऐसा होगा and x cube, यहाँ पे इसका derivative 0 है, and guess what? इसका second derivative at x equal to 0, it's 32 into 3 into 2 into x. So the second derivative is 0. तो यहाँ पे इसका inflection point, और you get it, right? और फिर यहाँ पे इसका derivative positive होना शुरू हो जाता है, and so it's going to be like this. Yeah, that's what the function is. Yes, and right. तो वो derivative हमेशा increase करते रहेगा. So after some certain time ये हो जाएगा, ये यहाँ पे intersect करेगा. That means it does have in fact 3 roots. So a is correct, c is correct. Is b correct? F of 3 equal to 12. F of 27. No, it's not 12. It's not. Okay, it's an into function. No. So a and c only. 92 by a and c. 93. Still अपन एक बार चेक कर लेते कि क्या ये सारी प्रॉपर्टीज एक्चुअली फॉलो करता है. So this is f of x. F of 2x would be 30. Oh no, shit. ये चीज f of 2x है. We want f of x. It's different. Okay. It's going to be 4/9x, and that is what actually f of x is. This thing is f of 2x, x cube, sorry. It's f of 2x basically. Oh, yeah, in that case, f of 3, that would just be 12. So B भी correct रहेगा, A, B, C. Okay, ये हो गया. 93. 93 is from an external point P, pair of tangent lines are drawn to the parabola if theta 1, theta 2 are the inclination of the tangents on the x-axis. Okay, such that theta 1 plus theta 2 equal to pi by 4 and the locus of
P is okay. Theta 1 plus theta 2 is pi by 4. Huh? ठीक है. External point P, tangent lines are drawn. Y squared will be 4x. Seriously. Locus of P is okay. Okay. क्या y equal to mx plus a upon m. A is 1 in this case, so 1 upon m. That's what the thing is. Or if it passes through same x naught y naught, इसके दो solutions like m is just m squared x naught minus m y naught plus 1 equal to 0. और ये जो दो solutions आएंगे those represent tan theta 1 tan theta 2. So अगर अपने को theta 1 plus theta 2 ढूंढना है तो just tan inverse of tan of theta 1 plus theta 2, which is what m1 plus m2 upon 1 minus m1 m2. इसका tan inverse वो अपने को निकालना है, and that's actually equal to pi upon 4. How? That just means m1 plus m2 is 1 minus m1 m2. In other words, m1 m2 plus m1 m2, sorry, m1 plus m2, that is 1. So m1 m2 तो आपको पता है, it's just 1 upon x naught. m1 plus m2 is also is just what y naught upon x naught. Yes, that's equal to 1. So 1 plus y equal to x, that's our locus. X minus y minus 1 equal to 0. So 93rd का C. But ये तो single option that हो गया. 94th. 94th is let integration from what? Integration from 0 to pi upon 2 power n natural log of sin x dx equal to a n, and from 0 to pi upon 2 power n natural log of sin x dx is equal to b n. Then sin x dx is equal to a sub n, and this is equal to b sub n. Pi upon 2 power n you say. अपने को हर जगह में सिर्फ a1 प्लस, सो बेसिकली an प्लस bn अपने को ढूंढना है. सो an प्लस bn यार 2 पावर n लिया इन लोगों ने, ये बहुत गलत किया. सो 0 टू pi upon 2 power n of what? Natural log of sin x cosine x, like that. Okay. Alright, n plus bn is gonna be like that. But how is this? Wow, not good. Okay. और अपने को सिर्फ 1 और 2 ही ढूंढना है anyway, so it's not that complicated. Let's just go for 1. So a1 plus b1 is equal to what? Is it equal to 0 to pi upon 2 natural log of sin dx. I mean, okay, not that bad. You can change and stuff, but ये actual में change नहीं होगा. Just have to do it the normal way, right? अपने को इसमें ढूंढना पड़ेगा, या अपने को a and b n दोनों ढूंढने पड़ेंगे. तो एक ढूंढने तो दूसरा भी आराम से मिल जाएगा. या d from 0 to indefinitely करते हैं. So 1 times natural log of sin x then dx. What I'm saying is कि इसको differentiate कर देते हैं, इसको integrate कर देते हैं. So it's gonna be what? X natural log of sin x and then minus integration of, so x upon sin x times, ये बहुत बुरा आइडिया था, राइट? ये बहुत बुरा आइडिया था. Times cosine x. Okay. No, ये बहुत बुरा आइडिया था यार. And it's going from like 0 to pi upon something. Okay, now what? We can't just keep going. ऐसे differentiate करते रहे तो बहुत बुरा होगा. It's like cot x. You could just keep on going to cot square x or something, but I don't want to do that. अब क्या? ये तो पागलपन है. So maybe like multiply by cosine x some way and at that one. नहीं समझ रहा इसमें क्या करना चाहिए. कुछ तो कर सकता हूँ यार, कुछ तो इसमें
या फिर मुझे इसको प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल जैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। a1 प्लस b1 ढूंढना ओके रहेगा, बट a2 प्लस b2 ढूंढना पाई अपॉन 4, that's just stupid. That won't work यार। Unless of course अपन a2 plus b2 को अलग टाइप से लिख सके, then that would actually make sense. So let's do it. 0 to pi upon 2 अपन सिर्फ इंटीग्रेशन एक बार का ढूंढ लेंगे, उसके बाद में we won't care about it. So it goes from 0 to pi upon 2 as well. जब pi upon 2 पुट करोगे इसमें 1 होगा, and then natural log of sin x upon x, ये टाइप का अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, so you can just say it's x upon sin x into sin x natural log of sin x, and natural log sin x natural log of sin x that which is 0 and x upon sin x of just 1. So 0 डालने पे h में 0 हो जाएगा, and that means ये तो पूरा गया यार, ये तो पूरा गया, और इसे बचा हुआ जो है वो अपने को डील करना है। Right, it goes from 0 to pi upon 2. That's a nice thing. So you can say it's just negative half integration of 0 to pi upon 2 of so x into cosine upon sine plus sine upon cosine. I think that, wait, no, not just that, in fact, because इससे better तरीका है हमारे पास में। Right, so you can write it as oh no, yeah, तो ये हो जाएगा x cosine upon sine and then plus pi by 2 minus x into cosine into sine upon cosine cos, तो reciprocate हो जाएगा dx. This is just bad. Hey wait, अपन इसको change कर सकते हैं ना, we can do like for pi upon 2 and that stuff. So kind of trying to increase this actually. Right, अगर ये सिर्फ pi से होता then that would actually make it happen, right? Yeah, if this was like that, but ये ऐसा नहीं है, and can't deal with it. नहीं यार, ये काम नहीं करेगा। So to find out the integral is, you of course know कि ये integral और वो integral same रहेगा, right? Man, मुझे इसका एक्चुअल में लाइक एक समरी क्रिएट करनी चाहिए कि नेचुरल लॉग sin x नेचुरल लॉग sin x इनका इंटीग्रेशन और sin x sin squared x उनका इंटीग्रेशन, so on. So you can definitely write this thing as cosine x, right? ये भी चलता है because same values है, बस ऑर्डर अलग है उनकी. And then what? You can natural log tan x. No way. Come on, yaar. So you can say okay, I is integration from 0 to pi upon 2. वो तो 0 हो जाने वाला था, right? So other part was just negative integration of x sin x upon cosine x dx and then 0 to pi upon 2 of course. और जो दूसरा था part that's like I is इस वाले के लिए it's just negative 2, okay, negative 0 to pi upon 2 of x cosine x upon sin x dx. But then once again ये जो property हम यूज करके उसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, right? So you can write this thing as, oh no wait, यहाँ पे negative आएगा, oops, should be positive in that case. Okay, so you can write this as what, pi by 2 minus x, और फिर जो यहाँ पे cosine upon sin था उसको अपन convert कर सकते हैं sin upon cosine dx, right? And then what if I just add these two? ना कुछ अच्छा नहीं मिलेगा अपने को, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो फिर अच्छा मिलता, बट यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है. So some other thing, something, right? Have to do something. तो बहुत बुरा हो रहा है यार. ठीक है, आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ कि ये मैं बस पिन का बोलते जा रहा हूँ. आई डोंट थिंक ये एक्चुअल में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते इस टाइप से. तुम्हें प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, एंड दिस जस्ट सक्स. I mean, you can definitely add this and say, okay, 2i is just negative integration 0 to pi upon 2 of what, x upon sine cosine and dx, and then say, okay, अपन pi by 2 change करेंगे such that this actually remains the same, and okay, then it's solvable. Not that, but बहुत लंबा है यार.
So this would be like 4i is equal to, so pi by 2 minus x वहाँ पे आ जाएगा, and that means ये cancel हो जाएगा. So negative pi upon 2, and then it's just integration of what 1 upon sine cosine dx from 0 to pi upon. You can see क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा. So अगर ये डायरेक्टली अपने को पता नहीं है तो ये नहीं सॉल्व हो सकता, इसलिए नॉट सॉल्वेबल. तो इसकी समरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट स्टिल जस्ट कीप ऑन गोइंग. मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या आंसर हो सकते हैं इसमें. So I is just negative pi upon 8, and then integration of 0 to pi upon 2 of this thing. So you can say it's negative pi upon 4 integration of 0 to pi upon 2 of, or maybe we'll just keep with 8, 0 to, let's go from 0 to pi, and then it's going to be 1 upon sine x dx. कैसे किया मैंने? So t of 2x और sine of 2x. So 2x मैंने x में कन्वर्ट कर डाला, लिमिट्स चेंज कर दिए. Okay, cool. And then this thing, it's not that hard because it's just cosec of x, उसका integration. So it's going to be negative pi upon 8 natural, actually negative to positive, natural log of cosec x. क्या होता है? cosec x cot x plus cot x, okay, plus cot x. It goes from what, 0 to pi. So when you put 0, oh no, 0 to pi, it's not defined at places, but hey, limiting case अपन कर सकते हैं ना. So this will just be what, pi upon 8 natural log. So yeah, 0 to pi, just go for, let's say, alpha to beta, then this would just be what, 1 plus, so you give 1 upon sine and cosine upon sine, so just 1 plus cosine of alpha upon 1 plus cosine of beta, right? So if you go from beta to alpha, similar case यहाँ पे. अब अगर मैं 0 और pi यहाँ पे put कर दूँ, just get what, pi upon 8 natural log of, shit, no, this doesn't work यार. यहाँ पे लिमिटिंग केस भी काम नहीं कर रहे, so it's going to 0 actually, and this is not good. I think मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, इसलिए ऐसा हुआ होगा, but you get the idea. It's solvable, but बहुत टाइम लग रहा है. ठीक है, I'll see you guys in the next video.